Yeah, so welcome, Dr. Manish. Yeah. So, like, my first question is like, so how can we, like, we eat so much outside nowadays, and like due to this, uh, like this Swiggy and Zomato thing, like everyone is like, every time it's so accessible, and so what can we do about the nutrition? Because like every day people are like most of the time they are always consuming junk food, and like the home food is not there. Yeah, Nice. excellent So question to what start can you out say? with, and I must, at the outset, congratulate, Fincart for doing this health initiative, project on this day of the National Doctors Day, where we are actually celebrating the birthday of Dr. Roy, Dr. BC Roy. So, anyways, so started out the discussion for today, the 1 hour live session on a very interesting topic of nutrition and how can we keep ourselves on the healthy food and the healthy diet in spite of the Swiggy and the Zomato. So you'll be glad to know that there are healthier options also which you can order on the Swiggy and Zomato. So the outset we should know that the healthy food or any healthy diet has basically 4 or 5 components: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals, and our hydration, the water content. So, in day to day needs, everybody's body needs a balance of all the things together, right? So, you need about 25% of carbohydrates in your plate, 25% of protein in your plate, and about 50% of your plate should have more of fruits, veggies, and salads. So if we can do that, then we are doing a healthy diet, right? So a healthy diet, or of not going towards more junk food, would be to choose rationally from your these foods, which is protein, carbs, vitamins, and minerals. So if your plate, so the best way to do is a plate method, that you kind of keep your plate full of 50% of fruits, veggies, and salads. So if you order even on Swiggy, Zomato, and you're ordering a quick snack, you could even order a salad, right? Or you could even order a simple bhel puri maybe, right? So it's still much more healthier than other more of carbohydrates or fats. So carbohydrate at any one point of time, which is our basically our rice, our rotis. So if we can keep our roti chawal come and increase the subsies, our veggies, our fruits, and our salads in a plate method, I think we are kind of ticking all the boxes. So your question which started out with, how can we correct our habits of eating? So even when we eat outside food, we have to try and make healthier choices, which we can all do at the same time despite ordering from outside. So if we are going for a pizza or a pasta, if we can increase the vegetable content and decrease the carb content, I think we have ticked most of the boxes there. So I think that would be a small trick or a hack to kind of still eat outside and yet make it healthier, right? And I think I will just leave it for now. We'll leave the one-way traffic versus I would want a more communicative, discussion today afternoon. Yeah, so and like nowadays people have the pain in the body has been starting. Like most of the people have pain in their like back joints. So like what solution does Yeah, like excellent question. So from a more active lifestyle of working outdoors, and post COVID, we are all working in front of screens, working from home, and all our work has shifted to our mobile phones, our screens. So that is leading to wrong postures while we work. So as you can see, I am sitting in front of the screen. I've got a good chair, a good back support, and the screen is at eye level, and my feet are kind of rested on a support down so that my back is properly rested. So if we make sure that at all our workplaces, that our posture correction is there, and my cell phone has kind of a support or has got some kind of this support, and I don't have to kind of
look down, that always makes, so must make an effort to get yourself onto your eye level as much as you can. Or if you even see that if I can do this much versus this much, that makes a huge difference on the neck. So all the muscular pains and aches generally stem out of wrong postures in most of the cases, unless we have some underlying vitamin deficiencies or some other things which might aggravate the muscular aches and pain. So in short, if we can keep our postures correct while working, or even while watching TV for that matter, if we kind of get on the bed and start to lie like that, that's again bad for the neck and the back. So we have to make sure that we are properly comfortably seated, where all our joints are in a neutral position, because we think it's in a neutral position but our spine is taking the brunt. And over time, again and again, repetitive use in the wrong posture would lead to long term problems and issues. So the first treatment for any muscular aches and pain, for prevention and for treatment, is posture correction. And the fancier word which we have used is called ergonomics. So if you can do it ergonomically, that while working, so somewhere in some workplaces they have even started to do standing workstations, where people just while working they stand and work. That's the most neutral position. You can't affect your neck or your back while you're standing, and you're kind of burning more calories at work. So even WHO for that matter classified sitting equivalent to a new smoking. So while we work, we sit and work, we are actually not doing healthy things to ourselves. So that's why in the West they've started to do more standing workstations as well. Yeah, so like we did the pain thing, and like what about the obesity? Like many people, like especially after COVID, like everyone is just like they have reduced down their physical activity, and like due to being like all these Swiggy Zomato things and like the Amazon things available, people are not able to go out or maybe like Yeah, go to shop also. I think that yeah. also is Right. a factor. So what So, is the thing yeah, for that? excellent question. Right. So, post COVID, all our physical activity has come down. So, definitely we need to work on our exercise and our diet. There is no one size which fits all. So the first thing which starts with, is there a hereditary link to the obesity? So if there's a heredity or a genetic predisposition to obesity, so as an Asian Indian population, we are at slight genetic disadvantage. All our genes are thrifty genes, or the conjuice gene, which is inbuilt for save for the rainy day, meaning that genetically when we are born it is already programmed that whatever calories we eat, it will save for a rainy day. So therefore, even if I eat 200 calories and my body needs maybe 100 calories, rest of the 100 calories are going to go in the bank. So our Asian gene is made such that it will always try and save the calories for the rainy day. So fat or obesity is basically a bank of the calories which we might need for a later day. So the body is trying to, is the brain is thinking like that, oh my god, tomorrow I might not get these calories, so therefore save today. Right, that's why we save money, right? That tomorrow we might need it. And Fincart does a amazing job at kind of helping us out there. So therefore, when we try and save money, right, so our bank or our brain is programmed like that, that every bit comes in we try and save, right, for that rainy day. So how do we kind of treat them? So first of all, if we are genetically programmed to save it, can we reduce it of giving it less? That is, if we eat less. So if we give less calories to the brain is like, oh my god, I am earning less money. So if I start giving you less money, you will become even more thrifty. You will even spend less. So eating less is not the answer.
eating smartly, or the newer millennial word is mindful eating. So what is mindful eating? That we make a mindful choice of what we put on our plate. If we start to do that, we can um, defeat obesity in the way that genetically we can try to outsmart it. So therefore the answer is give smaller calories at interspaced. If I have to give you, say for example, 1,000 rupees, there are two ways to give you. Straight away give you 1,000 rupees. The other way is give 100. So this slower way of giving you calories would not set the alarm rolling in the brain, oh my god, I have to put all the calories in the bank, right? So that's point number one. Point number two, that the exercise part. So whenever we have to try and find out some ways that we can burn some of the calories. It's like the ATM withdrawal, right? Unless you do some withdrawal, right, the money is not going to move, right? So same here. So same, some kind of a withdrawal is needed. You need to burn some amount of calories per day. So people have smart watches, people have said 10,000 steps, 5,000 steps. I said no matter what, small bit is a long bit. So even if you can do a little bit, right, that goes a long way. So the trick in that is the aggressive the activity, the lower amount of time you need. So some, I hear this many number of times when patients come in and tell me, डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम ही नहीं है, आई एम माय लाइफ इज टू बिजी, right? We are working 8 to 8, 9 to 9. I don't have any time to find out time for my exercise. I tell them, see, there has to be that you have to just take out 15 minutes from any of those 24 hours where you can walk or do brisk walk or anything on a regular 5 days a week at least, right? So you don't need to take out extra time for your exercise. So for example, you're coming back to your home, right? And if you're using public transport, get off it early or start to walk a kilometer, 2 kilometers back to your house, or you try and find out somewhere maybe in your afternoon, in your office pre-lunch, that I'll walk for 15, 30 minutes, at least do something pre-lunch, right? Or in my office, can I find 15 minutes of an excuse to kind of walk from one desk to the other desk, right? And it's done for the day. So those are small ways where we can get those 15 to 30 minutes of a brisk walk, or maybe use the stairs more. So that's the other way. So um, summing it up, diet, yes, plays an important role, but more superseding on all of that is our genetics at play, which unfortunately for our Asian Indians is already in that preserving mode. It just wants to save everything. So therefore, if we eat a little bit of extra calories, it's going to go in the bank, right? So that's what we have to kind of be aware of. I hope that answers some of it. Are we opening up questions as of now? Yeah, so like now, like let's catch up on like the famous word diabetes, like because like in India, I think it's the capital of diabetes, like the Yeah, we are. in the world, it's like the main Yeah. capital of diabetes. China So just beats us on the population level, but otherwise we are there. We are number one in that, which yeah, we do so how not to want. prevent that? Yeah. Right. Excellent question again. So what I just said, it's almost same for obesity and diabetes. So again, the genetic link on diabetes is very strong. So in, if you have a very strong family history of diabetes, so the rough rule is if one parent is diabetic, you have about 30% chance. If both parent diabetic, you have about 50 to 80% chance of diabetes. So one should be aware that if there's a strong family tree of diabetes, then I need to work harder, start taking care of my diet and exercise. So I tell all my patients that don't stop your kids from not eating sweets, but tell them to eat that smartly and run, make them do some sports. So sports is the best way for the younger population to engage in physical activity and yet enjoy the activity at the same time and help prevent diabetes. See, the word is prevent diabetes, right? So if I have a genetic link of diabetes, it's going to come
probably. So what one can do is, okay, if I'm going to get it at 20s, 30s, 40s, the older norm was 60s के बाद ही आती थी, 45 के बाद ही आती थी diabetes. But am I at a risk of getting it early? The answer is probably yes. So one has to be very careful. If you have a genetic link, you need to be aware of this and start to work with your diet and exercise and engage in the activity which you can do regularly. All these things we do on these days when we hear about nutrition, exercise, some kind of physical activity. When we hear these things, it sounds very nice. अच्छा लगता है सुनने में all these fancy things. But what happens is we fall off the wagon. It is human nature. What is human nature? That what I do on a daily basis, I'll come back to it. So to keep us motivated in trying to help prevent these complications of not so healthy lifestyle choices is make it consistent. So more consistent it becomes, the better it would be, the more we will get the results. So make it easy on yourself. If in diet, small changes like taking more veggies in your plate and reduce the carbs. Second, if anywhere we can find some exercise time, right? Anything small, consistent, right? So 10%, 10% weight loss gives 50% health benefits. I'm sure this question I would pose to, Tanveer that this kind of ROI will not be the return of investment, that only 10% investments and 50% is the return, right? So these numbers are totally different, right? So that's what the health needs, just 10%, and 50% your health would show up by reversing all of this. So that's how we can prevent diabetes. At a strong family history, start to work on your diet and exercise. That's where the game lies. There are certain tests which we can do, that how much is the insulin resistance and all that, but everybody finds their own zone. uh, Again, one size doesn't fit all. So there are general rules for things to kind of help prevent diabetes, but again, one has to find the zone where one is comfortable with and can do consistently. The answer is on a consistent basis. This lifestyle is a test match. The life is a test match. It's not a one day or a 2020, right? So therefore we have to try to make ourselves realize how can we do it consistently. That's the name of the game. Yeah, so like we have some like general questions now. Like so, can you help us understand some kind of sample diets that adults and kids can use? Sample diets. All Yeah, right. So that's a very interesting question. So there is, as I said, one size doesn't fit all. So the best is to look at it as a plate method, right? That's where all over world it's being kind of now being recommended. So with the plate method, that 50% of your plate should be fruits, veggies, and salads. 25% of your plate can be some fiber rich carbs. yeah, So any carbs which are more fiber rich, for example oats and other things, are have to be 25%, and 25% can be protein. So for non-vegetarians, 25% can be any form of a non-vegetarian food, or for the vegetarian it could be sprouts or paneers and other forms of vegetarian sources of protein. So vegetarians always in India lack their protein intake. So the best way to go with a general rule for either kids or adults is that plate method, that 50% of the plate fruits, veggies, salads, 25% carbs, 25% proteins. So that's kind of how you is the best way, simplest way to kind of remember that you're doing right in your life, I guess. yeah. So like you can also it comes from the audience that you can like talk in thoda Hindi mein, like so that people Right, get the point. absolutely, we can. Sorry. Yeah. So here's a question it has come so what about digestion and constipation related problems? So how ये solve कैसे कर सकते हैं लोग? ओके, अगेन हर हर इंसान के लिए सेम चीज नहीं है. डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन, अगेन इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी पीकू, right? That gut से related is our mind, and our in our Indians we feel very uncomfortable.
whenever we haven't cleared our stomach or there is a lot of gas issues, right? So again, रफ आंसर क्या है कि खाना टाइम से खाना है, राइट? सो इफ यू कैन मेक मील टाइमिंग्स फिक्स्ड, अगर हम मील टाइम को फिक्स कर सकते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स is the answer to reduce the load and the burden on our intestines. Our intestines and our digestion is based on the bacteria. हमारी अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में हेल्दी बैक्टीरिया है विच जो खाने को पचाते हैं. सो आवर मेन पाचन शक्ति, आवर मेन डाइजेस्टिव पावर ऑफ आवर बॉडीज इज हाउ हेल्दी आवर गट डिपेंड्स ऑन आवर बैक्टीरिया. सो दिस इज द न्यूअर थ्योरी एंड द न्यूअर विच इज जो नया आया है कि जितना हेल्दी हमारा बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन का हेल्दी बैक्टीरिया, उतनी अच्छी हमारी पाचन शक्ति. एंड जो गैस बनती है कई लोगों में ज्यादा, राइट, क्या उसको हम इरिटेबल बावल कहते हैं, कुछ कहते हैं. सो दैट डिपेंड्स वो बैक्टीरिया कितना हेल्दी है. तो जब भी बैक्टीरिया खाने को पचाता है वो गैस बनाता है, इट मेक्स H2 gas. So whenever bacteria is not healthy, the gas will be more and you would go to either constipation or diarrhea or the gas forms. So people are working on that. Science has been working for the last few years. That's where probiotics, हमारी सिंपल दही, राइट? सो प्रोबायोटिक्स खाने में हमें बढ़ाने हैं, राइट? चाहे वो हम एलोपैथिक वे में लें, दवाइयों में लें, या नेचुरल फॉर्म में लें. नेचुरल फॉर्म बेस्ट सोर्स इज मिल्क, राइट? द कर्ड्स. But otherwise all our fiber rich foods will always help improve the gut health. So वो हमारे बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं. या सो एक और क्वेश्चन है कि लाइक बहुत सारे लोग के आजकल विटामिन डी डिफिशिएंसी है, सो हाउ कैन दे रिजॉल्व दिस इशू? Yeah, excellent. Again, see, we are all working indoors. हम सब अंदर हो गए हैं, right? हम बाहर नहीं खड़े हैं. So विटामिन डी का बड़ा इंटरेस्टिंग वो है. I'll just take I think a few minutes, and it's बहुत interesting question whoever raised it, right? That we all find vitamin D is deficient. Is it the sunshine vitamin? Is it the vitamin of life? ऐसे करके अजीब अजीब नाम दिए हमने इसको. So सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि विटामिन डी हमें खाने से नहीं मिलता है, करेक्ट? विटामिन डी हमें सन से मिलता है. एंड विटामिन डी कैसे मिलता है? इट्स नॉट द सन रेज. सिंपल सन रेज विच हैज यूवीबी स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट बी की लाइट होती है सन रेज में, जो 11 से 3 के बीच में इंडिया के जोन में आती है. अल्ट्रा वायलेट बी स्पेक्ट्रम. लेट्स टॉक साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक. So 15 to 30 minutes of ultraviolet B radiation on a daily basis हमारे स्किन पे जब पड़ेगी तो हमारी बॉडी ही विटामिन डी बनाएगी. इमेजिन, ऐसा कोई और विटामिन नहीं है शरीर में कि जो अपने आप बॉडी बना ले. हमें सिर्फ सनलाइट चाहिए एंड विटामिन डी बन गया, हमारा डेली रिक्वायरमेंट हो गई मीट. So therefore, some of the organizations are trying to say that why call it a vitamin? What, isn't it a hormone now, right? Because vitamin हमारे हमें हमें फूड से मिलता है, right? So ये तो फूड से नहीं आ रहा है, तो सिर्फ सनलाइट से मिल रहा है. गॉड ने, भगवान ने, he has made vitamin D receptors everywhere in the body. So beyond just bones and muscles and everywhere, vitamin D is in the eyes, is in the heart. It's anti-cancer properties, it's anti-diabetic property. So vitamin D receptor is everywhere. So therefore the role suddenly became, paramount. That vitamin D deficiency and all that. So vitamin D, the best way is 11 to 3 sun exposure, 15 to 30 minutes. 11 से 3 हैंड्स एंड लेग्स को एक्सपोज करके हमें 15 से 30 मिनट सनलाइट चाहिए. हाउ मेनी ऑफ अस हु आर वर्किंग इन ऑफिसेज कैन एक्चुअली गेट आउट देयर? हम कितने लोग बाहर जा सकते हैं अपने पैंट्स एंड शर्ट्स को ऊपर करके धूप सेक लें 11 से 3, एंड 8 महीने यहाँ गर्मी है, राइट? सो देयरफॉर इम्पॉसिबल. सो देयरफॉर बेस्ट इज दैट विटामिन डी 60,000 यूनिट्स का सिंपल सप्लीमेंट आते हैं महीने में एक बार, 1 कैप्सूल महीने में एक बार, इट्स सॉर्टेड फॉर द होल मंथ. सो इतना विटामिन अगर हम ले लें रेगुलरली, इट मीट्स आवर नीड्स, हमारा जरूरतें पूरी कर देता है. सो विटामिन डी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. दोनों साइड नहीं जा सकते, ज्यादा भी और कम भी. तो ज्यादा विटामिन डी भी लेने से इट कैन गेट टॉक्सिक. कुछ विटामिन हमारे शरीर में ऑयल सॉल्युबल हैं, विटामिन ए, डी, ई, के. ये विटामिन ज्यादा लेना हानिकारक है, can get toxic to us. So one has to be really careful when we take excess of anything.
देयर आर पेशेंट्स हु हैव कम इन, डॉक्टर साहब वो विटामिन डी कम था, मैंने 60,000 का डेली लेना शुरू कर दिया, राइट, डेली, अमेजिंग, सो यू जस्ट लैंड इन टॉक्सिसिटी, राइट, एंड दैट कैन कॉज किडनी डैमेज एंड अदर प्रॉब्लम्स, वो और चीजों को प्रॉब्लम दे सकता है. सो देयरफॉर व्हेनेवर यू हैव विटामिन डेफिशिएंसी, टॉक टू योर फिजिशियन, टॉक टू योर डॉक्टर, प्रॉपर डोजिंग है उसका, राइट. सो उसको देयर इज अ मेथड टू इट. सेफेस्ट क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, 60,000 के जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो हम महीने में एक ले लें. सिंपल, simple. In fact, I would push Tanveer for that, that if you want, there has been study on it, work absenteeism, how to reduce work absenteeism, right? So many of the corporates organizations are saying, once a month give vitamin D to all your employees, irrespective of the vitamin D levels. You will see the work absenteeism come down, people will fall less sick, because this is very important for our immunity. Yeah. So here's a question like, so even after, sometimes we exercise and like even after that, we feel stressed and like we feel kind of fatigued due to after exercising. So like how can we reduce that? Yeah, so the answer is that we have to go slow. In such ऐसी सिचुएशन में always take it easy. आप must hear your body. अपने शरीर का सुने जरूर. हमें लगता है कि हम बहुत एग्रेसिव होके हमने बहुत फास्ट कुछ एक्सरसाइज शुरू कर लिया, ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, राइट, एंड सडनली वी जस्ट गॉन, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कुछ हमने कर लिया, भाग ज्यादा लिए या हमने जंप ज्यादा कर लिया, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर बॉडीज, इफ दे आर नॉट यूज्ड टू सम एक्सरसाइजेस, we can't just all of a sudden go there. So I think the answer, उसका उसका जवाब ये है कि अपने शरीर की सुने, राइट, उतना करें जितना लग रहा है इतना मैं कंफर्ट जोन में कर सकता हूँ, उतना भागें, उस स्पीड से भागें जहां सांस हमारा रीजनेबल लेवल पे है, राइट. सो द आंसर इज, एक आंसर नहीं है फटीग को, बट गो स्लो, हियर योर बॉडी, जेंटली ग्रेजुअली इंक्रीज द एक्सरसाइजेस. Yeah. So can you please like share some thoughts on intermittent fasting? Excellent question again. So it's simple word. It's basically Jain diet. So sometimes we हमने ना अपने rituals के साथ in all religions कुछ चीजें scientific जोड़ ली हैं, right? So I think Jainism is one of them. That what is intermittent fasting? Intermittent fasting है कि हमने अपना dinner जल्दी कर लिया, right? हमने fasting का time बढ़ाया. सो उससे क्या हो रहा है, दैट बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम मिल रहा है एंड लिवर को काम करना पड़ेगा. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग का? जब भी हम कोई व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, बिकॉज ऑफ आवर रिचुअल्स, यू नो एनी ऑफ द रिलीजन्स, हर रिलीजन में फास्टिंग है कहीं ना कोई त्योहार पे. सो आवर लिवर इज द किचन, हमारा जिगर, हमारा लिवर हमारी रसोई है. जो हम खाना नहीं खा रहे हैं, सो क्या क्या हमारा शुगर जीरो हो जाता है? हमारा शुगर मेंटेन रहता है. बॉडी में कुछ चीज है जो ग्लूकोज बनाएगा ही बनाएगा, हम कुछ नहीं खाएं, वो लिवर है. सो जब हम फास्ट रखते हैं, सो लिवर को काम करना पड़ता है कि वो ग्लूकोज बने. सो एक तरह से लिवर एक्स्ट्रा फैट है जो स्टोर्ड है उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, या वो प्रोटीन को तोड़ेगा अगर हमने खाया नहीं. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट ये हुआ कि अगर हमने फास्ट लंबा रखा तो हम बॉडी को बोल रहे हैं कि आप कुछ चीजों से विड्रॉल करो, एटीएम विड्रॉल. हम बॉडी को कह रहे हैं आप तोड़ो कोई चीज को, राइट, जिसने एक्सेस स्टोर कर रखा है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज कंट्रोल में, ओबेसिटी में हेल्प करता है, राइट. बट अगेन एज आई सेड, वन साइज सबको फिट नहीं होता है. सो वन हैज टू सी कि मैं फास्टिंग टाइम कितना बढ़ा सकता हूँ. if I have my last meal जल्दी खा लेता हूँ, right, 6-7 o'clock, जो old time में था, right, which unfortunately our busy lifestyle, it has pushed the dinner time to 8, 9, 10 and beyond, वो गलत है. So we should have dinner earlier and have my breakfast 8, 9. So I increase my fasting times to beyond 12 hours and beyond. तो 12 घंटे से ज्यादा फास्टिंग जब करने लग जाते हैं, so liver को and fat content को reduce करता है, लिवर को हेल्प करता है, सो बॉडी के लिए हेल्पफुल है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे साइंटिफिक डेटा काफी स्ट्रांग होता जा रहा है फॉर मेनी ऑफ द रिवर्सल ऑफ दीज डिजीजेस, राइट, जो आज की तारीख में वी सी
you know, all around us. Yeah, that's well explained. So, like, can you share now some thoughts on like keeping our hearts healthy? Ah, excellent. So simple: diet, exercise. Must keep low content of your fats. So what again here, in the last few years there are many WhatsApps going. कई सारे WhatsApp university, आता है cholesterol no more. It's no more the bad boy or the naughty boy. लेकिन असली सत्य क्या है, राइट? हमें साइंस को एक बार में ही डिस्काउंट नहीं करना है कि बिल्कुल बेकार चीजें बातें हो रही हैं, डॉक्टर्स को दवाई देनी है, ये सारा फार्मास्यूटिकल ड्रिवन है। एक जो भी चीज कुछ बिकम्स मेडिसिन, दवाई कुछ बनता है, उसके पीछे कई सारे साल की रिसर्च होती है, एंड उस रिसर्च के बाद वो कागज पे आया है, उसको वहां पर हम वहां तक पहुंचे हैं। सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज की बात हो रही है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का नंबर शुरू में मानते थे 150, 130 तक रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई नहीं देनी है, राइट? धीरे धीरे जी 100 हो गया, धीरे धीरे 70 हो गया, 50 हो गया। कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है, जो हमारी शरीर में आर्टरी में जमा हो सकता है, उसको सबसे कम रखना है। अच्छा जी, ये वाला एविडेंस कहाँ से आया? एविडेंस यहाँ से आया कि जब देखा गया कि दवाई दे रहे हैं तो हार्ट अटैक्स कम होते जा रहे हैं, तो वहां से उन्होंने कोरिलेट कर लिया। जो चीज लास्ट कुछ सालों में निकल के आ रही है कि बियॉन्ड दिस नंबर इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, यहाँ एक फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिट इंसान, रोज ईटिंग बिल्कुल हेल्दी खाना, एंड उनको 5 स्टेंट पड़ गए। 5 स्टेंट पड़ गए। किसी हेल्दी इंसान को एकदम ऑल ऑफ अ सडन 5 स्टेंट पड़ जाते हैं। सो ये कैसे हुआ? व्हाट वाज द कॉज? हियर इज वेयर लाइज इन द जेनेटिक्स, कि हमारी अगर हेरिडिटरी जेनेटिकली अगर हम रिस्क पे हैं, सो मस्ट नो फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है, देन आई एम एट ए रिस्क। सो रिस्क में मीन्स मुझे और कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान रखना है, नो मैटर मेरा एलडीएल कुछ भी हो, शायद मुझे दवा लेनी है क्योंकि मेरी जेनेटिक्स ऐसी है। एंड डाइट में सिर्फ इट हेल्प्स 30%, सिर्फ 30% मैं हेल्प कर सकता हूँ बाय इंप्रूविंग माई डाइट, क्योंकि जेनेटिकली मेरा लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, वो मेरी रसोई है। सो अगर जेनेटिकली वो इज नॉट ग्रेट, इट विल मेक वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ही, मैं कुछ भी कर लूं। सो देयरफॉर कुछ चीज हमारे हाथ से बाहर है, वो हमारी जेनेटिक्स है, वो हमें रिस्पेक्ट करनी है, वो हमें समझना है। यही साइंस की कुछ लर्निंग है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, दैट एब्सोल्यूट नंबर्स ऑन द रिपोर्ट्स के बियॉन्ड हमें, वी शुड थिंक बियॉन्ड, एंड दैट्स वेयर द होल प्रोफाइल ऑफ पेशेंट फिट्स। तभी वो गाइडलाइंस की एक साइज सबके लिए, इस जनरल रूल अच्छा है, लेकिन देयरफॉर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर सेइंग हमें इंडिविजुअलाइज करनी है ट्रीटमेंट, कि हर कोई इंसान का शरीर सेम नहीं है। सो देयरफॉर दैट्स वेयर इट काइंड ऑफ स्टेम्स इन। Yeah. So, an audience has asked कि अगर like sugar fasting 300 से ऊपर है, so इस situation में what they should do? Yeah, must consult your physician and your diabetologist as early as possible, because again यहाँ पर एक again एक WhatsApp and false information is out there, right? कि 200-250 शुगर रख लो, right? HbA1c 10 रख सकते हैं, right? See, the answer is, जो मैंने बोला, साइंस ने शुगर के नंबर एक दिन में नहीं डिसाइड किए थे, right? धीरे धीरे आए। Is it again pharmaceutical driven? This whole talk we are having today, is it sponsored by anyone? It's not, right? I'm not being paid anything. Tanveer has been my friend and has been my guide, right? And he's my patient. So we are having a frank, honest discussion. There nothing to, कुछ भी यहाँ disclosure नहीं है. So जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, फास्टिंग का नंबर बाय WHO इज 126, 126 है कि जी 126 का नंबर, 127 क्यों नहीं है, 125 क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ढूंढा कि जब भी शुगर का नंबर 126 से ऊपर जाता है, आंख के पर्दे में रेटिना पे चेंज आना शुरू हो जाता है। तो 126 का नंबर फिक्स हुआ। फास्टिंग 180, खाने के बाद 180 का नंबर कहां से आया? जब भी शुगर बॉडी में 180 से ऊपर चली जाती है, भगवान ने सबके शरीर में किडनी में सेंसर लगा रखा है कि 180 के बियॉन्ड वो किडनी से बाहर फेंकेगी। जब ऊपर वाले ने गॉड में हर के शरीर में फिक्स किया हुआ है सेंसर कि 180 से बियॉन्ड शुगर जाएगी, वो बाहर आएगी यूरिन में।
इसका मतलब बॉडी इज ऑल्सो ट्राइंग टू थ्रो आउट, वो भी जो इज बैड वो बाहर फेंक रही है. तो हाउ कैन 200 250 बी ओके, राइट? सो वी हैव टू सिट बैक एंड थिंक न्यूट्रली. ओके, ये क्या, ये नंबर्स हैं, कैसे ये साइंस आई, राइट? सो मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं आई एम टोटली करेक्ट. Every day we are learning, and learnings have reached this level in the last 20 30 years. In before 1995 सारी गाइडलाइन कहती थी चलने दो जी, जब प्रॉब्लम आएगी तब देख लेंगे, राइट? सो बट द मंत्रा हैज चेंज टू स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन. सो नो मोर वी वेट फॉर द कॉम्प्लिकेशन टू हैपन कि जी दिक्कत जब आ जाए तब संभालेंगे. दैट मेंटालिटी इज चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया, कि जी चलता है जी, चलने दो, जब पहुंच जाएगी प्रॉब्लम तब संभालेंगे. अरे तब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी. व्हेन यू हैव एनी अदर कॉम्प्लिकेशन द कॉस्ट विल बी ह्यूज. आपको मतलब एनी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ज्यादा है. सो देयरफॉर वो हमें अवॉइड करना है. ये सारा टॉक आज इसी बेसिस पे, हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज थिंग्स. सो देयरफॉर एनी फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी मैसेज आए यार ये कुछ गलत सा लग रहा है, टॉक टू योर फिजिशियन, टॉक टू योर डॉक्टर, ट्राई एंड गेट द राइट इन्फॉर्मेशन. सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? दैट इज बिकॉज यू कैन बी योर ओन डॉक्टर्स बट विद द राइट इन्फॉर्मेशन. सो दैट वो बहुत जरूरी होना है, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है. एंड कोई डॉक्टर कह दे कि जी आपको दवाई नहीं चाहिए, आपको डायबिटीज मैं ऐसे ही फिक्स कर दूंगा, राइट? और some startup comes somewhere, trying to claim some tall claims. So it's good, must try it, but there is some science behind it, there is some truth behind it. पहले हम डायबिटीज रिवर्सल की बात ही नहीं करते थे. आज की तारीख में द वर्ड इज राइजिंग डायबिटीज रिवर्सल्स. अगेन द आंसर इज डाइट एंड एक्सरसाइज एंड कंसिस्टेंटली इफ यू कैन, अगर हम रोज कर सकते हैं तो रिवर्सल होता है. Yeah, well explained. So another question is like how to deal with high inflammation in the body. Yeah. So again, inflammation can mean anything. सूजन. So हिंदी में inflammation is सूजन. So inflammation is any inflammation in the muscles, joints, और कहीं पर भी हो सकती है सूजन, right? So marker which we used in COVID times was CRP, a marker of that. So when you say inflammation, inflammation can be anywhere, right? But from the diet perspective, super foods होते हैं, antioxidant foods होते हैं जो हमारी inflammation को कम रखते हैं. So basically, in short, it could be avocados, olive oils, eggs भी रखते हैं, right? So there are certain superfoods. Again, बहुत लंबी लिस्ट है, but in short, if we maintain that plate method, जहाँ हमारे अच्छे greens and veggies आ रहे हैं, हमारे पास already naturally हमारे superfoods जा रहे हैं. सो अगर हम उतना भी कर लें, राइट? सुनने में अच्छा लगता है ऑल दीज फैंसी थिंग्स, बट द आंसर इज वी हैव टू डू इट डेली. डेली कंसिस्टेंट जितना बनाएंगे उतना रिजल्ट मिलेगा. एक दिन विटामिन खा लिया और हो गया, एक दिन अच्छी चीज खा ली एंड नेक्स्ट डे वी आर बैक, दैट डजंट मेक सेंस. सो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. Yeah. So another question is like how important is vitamin B12? Excellent question. So B12 is important for the nerves, right? Unfortunately, in the vegetarian, in the source, the B12 source is only dairy products. सिर्फ दूध दही वगैरह में ही विटामिन B12 है. सो अगर हमारे खाने में हमारे B12 की नीड नहीं मीट होती, वी लैंड अप विद B12 की डेफिशिएंसी. B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कॉमनली होते हैं नर्व की टिंगलिंग, नमनेस, ऑल दैट. सो वो प्रॉब्लम्स में हम जनरली डॉक्टर्स हम B12 देते हैं टू इम्प्रूव द नर्व की हेल्थ. नर्व, नर्व हिंदी में नस, but nus can mean a lot of things. But in short, when we have tingling of the hands and fingers and pains, हम B12 देते हैं. So B12 deficiency in vegetarian form is more in dairy products. दूध दही वगैरह में B12 ज़्यादा है. Some of the superfoods like broccoli वगैरह में भी थोड़ा B12 है. But answer is इतना सारा खाना पड़ेगा तो B12 आएगा, right? डेली की रिक्वायरमेंट है. So जब तक हेल्दी डाइट आ रहा है, मीट हो रहा है रिक्वायरमेंट. जहाँ हेल्दी डाइट नहीं हुआ, वो रिक्वायरमेंट डेली की नहीं मीट हुई और हम डेफिशिएंट हो गए. सो वो हमें ध्यान रखना है. दैट्स द पॉइंट. Yeah. So like many people are asking about this ki like how to deal with back pain and neck pain. Like ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं इसकी वजह से भी एंड लाइक थ्रू डाइट आल्सो लाइक हाउ कैन वी डू दैट. Yeah, so diet mein there's nothing for pain per se, but yeah, as long as you can maintain your healthy diet, you're doing good on that front. But main thing, as I said, is the posture correction. So always start with posture correction. अगर कुछ actually medically wrong है,
talk to your a doctor, your physician, your orthopedician. Maybe you need some x-rays, maybe you need physiotherapy if there is kuch zyada, if something is wrong, medically, structurally something is wrong. But important thing, again, एक चीज नहीं है जो सब कुछ फिक्स कर देगा. So starting point is always your posture correction at work, right? That's the first point which one should start with, जो हम सब कर सकते हैं आसानी से. So that's the important point. Next would be vitamin D. महीने में एक बार 60,000 के जरूर लें. That will help to maintain our bone health, our muscles and everything, and other फायदे कई सारे हैं विटामिन डी के. महीने में एक बार विटामिन डी 60 के, no matter what your value is, महीने में एक 60 के का कैप्सूल, syrups, बहुत चीजें आती हैं. There are many names on that. So any of those once a month is safe for everyone. Yeah. So another question is like for any healthy person जो like diet अच्छा करता है and like regular exercise करता है, so उसके लिए like normal vitamin tablets, are they fine or like what should they do? Sorry, can I have that question again? Like अगर कोई healthy person है, so like should they continue taking the vitamin supplements? Not necessarily. Excellent question actually. कोई healthy है, why should he take vitamins? So the only thing is कि vitamin D की requirement नहीं meet हुई, right? Vitamin D के लिए उनको धूप में भी जाना है, right? तो अगर वो 15 से 30 मिनट डेली 11 से 3 के बीच में धूप में जा रहे हैं with hands and legs exposed, देन उनको कोई विटामिन नहीं चाहिए एज लॉन्ग उनका डाइट हेल्दी है. डाइट हेल्दी में क्या है, हमारा जो मैंने प्लेट मेथड समझाया, कि अगर उनके फ्रूट्स वेजीज ठीक जा रहे हैं, उनका एवरीथिंग इज बैलेंस, देन अननेसेसरली विटामिन इज नॉट अ मैंडेटरी चीज. आई एम नॉट अ प्रो विटामिन पर्सन की सबको विटामिन खिलाना ही है, राइट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई सिम्टम्स है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, देन वी थिंक ऑन विटामिन डेफिशिएंसी. बट द बेस्ट नेचुरल तरीका इज योर डाइट, योर हेल्दी डाइट. दैट्स द बेस्ट नेचुरल वे. Yeah. So like talking about diet, I wanted to ask like कि हम लोग को like daily में कितनी number of meals we should consume? Excellent question again. So, see, smaller frequent meals. So, कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस टू फिट रहने के लिए वो 6 स्मॉल मील लेते हैं. तो मैंने जो शुरू में कंसेप्ट समझाया था कि अगर हम एक साथ खाना दे रहे हैं, कई लोग जो वर्क करते हैं, बिजी हैं इन आवर ऑफिसेज, राइट सर, सुबह खा के निकल जाते हैं एंड बस हैवी मील वहां हो गया और फिर रात को खाते हैं, राइट? बिकॉज दे आर जस्ट सो बिजी थ्रू आउट द डे. नाउ व्हाट इज, यहाँ क्या हो रहा है, आपने सुबह सिस्टम को ओवरलोड कर दिया एंड रात को जाके फिर ओवरलोड कर दिया. बॉडी को चाहिए थे स्मॉल, धीरे धीरे 300-400 कैलोरीज चाहिए थे उसको. सो ओवरलोडिंग द सिस्टम, एक साथ सारा खाना फेंकना इज रॉन्ग. इट्स जस्ट इन द इंडियन सर्कमस्टांस दैट sometimes we kind of do that, but the best way is chota, small frequent meals throughout the day. So 3 major meals, which is our breakfast, lunch and dinner, right? मील टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है. 8 से 9 ब्रेकफास्ट, 1 से 2 लंच, 8 से 9 डिनर, रफली आधा घंटा आगे पीछे, एंड बीच में स्मॉल हेल्दी स्नैक, अ फ्रूट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच कम्स in between. So total if you can make 3 to 6 meals in the whole day, 3 major meal हो गए, 3 major breakfast, lunch, dinner, and बीच में small snack. Yeah, and so like one more question is like daily how much protein should we intake? Because like बहुत सारे लोग आजकल like I don't fast food में like non-veg भी बहुत ज़्यादा like people are Yeah, consuming. So what about that? yeah, yeah. So the medical requirement is which is 1.2 gram per kg per day. To make it easy to calculate for all of us, मैं कहूँगा 1 ग्राम पर केजी पर डे. सो इफ समबडी इज 60 केजी तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए उस इंसान को. ज्यादा प्रोटीन लेना हमारे किडनी को डैमेज करता है, राइट? एंड जैसे अभी किसी ने लिखा एंड स्टेज किडनी डिजीज है किसी को, राइट? जहां किडनी बहुत डैमेज हो जाती है वहां हम 0.8 ग्राम पर केजी कहते हैं. सो रफली उस पेशेंट में जो 60 केजी का होगा और उसको किडनी का प्रॉब्लम है, सो वी रिड्यूस द प्रोटीन कंटेंट बट वी डोंट मेक इट जीरो. बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ तो देना है प्रोटीन पर डे, वरना उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स मसल्स के लिए नहीं होगा. बॉडी प्रोटीन नहीं स्टोर कर सकती, उसको रोज प्रोटीन कुछ फॉर्म में चाहिए. तो तब हमें प्रोटीन
थोड़ा सा रिड्यूस करना है अगर हमें किडनी इश्यूज होते हैं, बट मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, योर डाइटिशियन हु इज ट्राइंग टू मैनेज यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपको उस टाइम वो दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। बट इन शॉर्ट, जो आपने क्वेश्चन पूछा, 1 ग्राम पर केजी पर डे इज द रिक्वायरमेंट, 60 ग्राम प्रोटीन। सो रफली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इधर दूंगा एग्जांपल एग का। एक एग में हमारा रफली 4 से 6 ग्राम प्रोटीन है। तो इसलिए आप आराम से 10 अंडे अगर पर डे खाएं तो आपको पर डे की रिक्वायरमेंट मीट होती है। तो रफली देखा गया है कि कोई भी वेजिटेरियन इंसान गेट्स अप टू 30 से 40 ग्राम, तो उसको थोड़ी सी शॉर्टफॉल रह जाती है। नॉन वेजिटेरियन, हमारे इंडियन सर्कमस्टांस पे डेली नॉन वेजिटेरियन वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, राइट? सो देयरफॉर क्या वो डेली 60 ग्राम प्रोटीन खा पा रहा है इंसान? So therefore, hardcore non-vegetarians we are very rare, right? It's only a occasional non-vegetarianism. So therefore, the rough rule is that 1 gram per kg per day, extra protein from if you are healthy in your there is no problem, then you can go up a little on that. थोड़ा ऊपर कर सकते हैं उसको. Yeah. So, what kind of diet is required to reduce blood pressure? The high blood pressure हो. Yeah. So here, audience is asking excellent question. अच्छे सवाल आ रहे हैं. So the answer is the DASH regime, DASH. So I tell all my patients to kind of remember this by the DASH regime, DASH. D is diet में 500 कैलोरी कम, right? So अगर हम 500 कैलोरी, हमारे best way to cut calories is reduce the sugars and reduce the carbohydrate. वहाँ हमने 500 कैलोरी कम किया पूरे डाइट में. A is for aerobic exercise, exercise in any form, right? So any form of exercise would help. S is for salt restriction, that ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना है, जितना खाने में डल रहा है अपने टेस्ट के लिए उतना काफी है, उसके बियॉन्ड सॉल्ट नहीं डालें. And S is also for smoking, so anybody who smokes should cut down or quit, preferably quit. And H is for alcohol in moderation and should reduce the alcohol consumption. That's the H part. So dash, DASH, ये follow करने से we can help to reduce our blood pressure by 10 to 15 millimeters. So again, it's not necessary कि ये सारी चीजें बिल्कुल टारगेट पे ले आएंगी ब्लड प्रेशर को, बट ये हेल्प करती हैं. Yeah. So one interesting question, like ये I think almost हम सब लोग करते हैं because like mangoes have come. So this is the question कि like can one have fruit immediately after a meal? या सो देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट कि फ्रूट मील के बाद खाना. जैसे मैंने बताया आपको, मतलब प्लेट मेथड. सो 50% ऑफ योर प्लेट should have fruits, veggies, so that, but that fruit is that 50% of the plate. So you can have fruit immediately after the khana, there is no problem. मैंगो, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मैंगो सीजन में, मैंगो इज हाई इन कैलोरीज एंड इज गॉट मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो फॉर डायबिटिक्स वी टेल देम if their sugars are high to cut down or not take. For people who are in the normal zone, I would say reduce the quantity of such fruits which are high in calories, जिनमें calories और sugar content ज़्यादा है. So mangoes में हमारा calorie content ज़्यादा है, so therefore हमें उसकी quantity घटानी है. So that's the other trick, the other hack, which sometimes we teach our patients, that if you are going to eat a mango khana hai, you want to enjoy the mango. So don't eat the whole mango at one go. Maybe 1/4 in the morning, 1/4 in the afternoon, 1/4 in the night. Or you could mix mango with a fruit, another fruit, right? Which is preferably इस मौसम में, I think it will go best with खरबूजा. तो खरबूजे के पीस में आप मैंगो के कुछ एक आध काट के डाल लो. So you have got best of both world. दोनों का बेस्ट हो गया. आपका हेल्दी फ्रूट भी आ गया एंड जो फ्रूट विच इज हाई इन कैलोरीज वो आपने घटा लिया. सो ट्राई टू मिक्स सच थिंग्स, राइट, कि हाई कैलोरी के साथ में मैं कुछ हेल्दी चीज डाल दूं, ताकि ऐसी चीज जो नॉट सो हेल्दी या नॉट सो विच इज हाई इन कैलोरीज. मैंगो पर से अदरवाइज इज वेरी गुड फ्रूट इन द सेंस दैट वेरी रिच इन विटामिन ए, आयरन एंड ऑल दैट, but it's just the calorie value उसका ज़्यादा high है. Otherwise, mango is a very good fruit per se if you look at from the calorie perspective, from the nutritious perspective. But it's from the calorie perspective इतना अच्छा नहीं है, so उसकी quantity थोड़ी घट जानी चाहिए. Yeah. So one more question is there कि how to manage low blood pressure? See, again, the answer here is that from the food or the nutrition perspective, we have to look at if you are on
यहाँ भी मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ है। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सो आंसर इज व्हाट आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स होने चाहिए लो बीपी के। लो बीपी इज डिफाइंड एज लेस देन 90/50, 90/50। सो बॉडी एट ऑल कॉस्ट इस प्रेशर को मेंटेन करेगी, 90/50 को, उतना हमारे ब्रेन और किडनी को चाहिए। होता क्या है, पेशेंट को कोई सिम्टम आता है, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड दे काइंड ऑफ गेट देयर प्रेशर चेक, एंड वहां पर बता दिया जाता है आपका ब्लड प्रेशर लो है। एंड देन दैट पेशेंट का कितना था जी, 100/70। 100/70 was not a low blood pressure, it was a normal blood pressure for that individual, perhaps शायद वो उसके लिए नॉर्मल था। अगर दैट पर्सन दवाई ले रहा है तो वो लो है उसके लिए, राइट? तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। बीपी लो डेंजरस कब जाएगा? अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है, आपका पानी लॉस हुआ है, आपको वॉमिटिंग्स हुए हैं, आपको डायरिया हुआ है या आपको ब्लीडिंग हुई है, तो आपका बीपी डेंजरस लो जाएगा। अदरवाइज बॉडी विल ऑलवेज कॉम्पनसेट करेगी टू मेंटेन इन अ नॉर्मल पर्सन 90/50 से ऊपर। वो सिचुएशन के हिसाब से डिफाइन होएगा कि वो कैसा लो है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, हाउ टू ब्रिंग इट अप। अगर लो चला गया है किसी भी इंसान में, उसको सिम्टम्स है, सो सॉल्ट रिच कुछ देना है। सो नींबू पानी विद एक्स्ट्रा सॉल्ट, मे बी सम कैफीन थिंग्स लाइक टी एंड कॉफी कैन बी गिवन, और यू कुड एलिवेट द लेग्स लिटिल बिट, ताकि हमारा ब्लड हार्ट में वापस जाए। दो आर द कॉमन थिंग्स वी टीच। बट अगर ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, सिम्टम्स हैं, टॉक टू योर डॉक्टर, गेट, हमें उसको एवेल्युएट करना है कारण के लिए। बट अगर दवाइयों पे है कोई बीपी पेशेंट, देन यू मस्ट रिड्यूस एंड टॉक टू योर डॉक्टर देयर। So another question is like how much carbohydrates should we take? Like because या अगर like चावल रोटी कर रहे हैं, so like Yeah, how much? excellent question here again. So again, there is is per the body weight. So roughly, if somebody is in the medium weight में है कोई इंसान, उसको हम कहते हैं कि आप अराउंड 1400 कैलोरी पे रहिए। सो 1400 कैलोरी में आप मानिए, मैं उसको कह रहा हूँ कि उसका 25% उसका पूरे दिन में उसको उसको कार्बोहाइड्रेट से आना है। तो रफली अराउंड 300 400 500 कैलोरी पर डे से ज्यादा ना आए कार्बोहाइड्रेट से, राइट? तो हम रफली अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ग्राम्स में जाएं, उसमें जाएं। सो रूल क्या है कि अगर आप 2 रोटी पे हैं, एक पे रहें, राइट? एंड दूसरी चीजों को हम वी शुड इंक्रीज इन आवर प्लेट, जिनसे हमारी कैल न्यूट्रिशियस खाना आए, राइट? हमारा वेजीज आए, हमारे फ्रूट्स आए, हमारा प्रोटीन आए। चावल खा रहे हैं तो उसकी हमें क्वांटिटी घटाएं। स्मॉल कटोरी राइस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज फाइन, बट अगेन इट विल, वो ये रूल चेंज करेगा सिचुएशन के हिसाब से। यंग इंसान, ग्रोइंग इंसान, थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, राइट? ओल्ड एज लेस रिक्वायरमेंट। डायबिटिक्स, ओबेसिटी, वी वुड प्रॉब्ली हमें उस पर कम रखना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इनटेक। बट ग्रोइंग बॉडीज, वीक इंसान, कोई मतलब डिजीज से, रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा हम हाई रख सकते हैं। Not so problem or healthy इंसान should keep carbohydrate 25 से 30% of the whole calorie intake in the whole day. Yeah. So another question is like is sugar-free sweeteries healthy for diabetes? एक्सीलेंट क्वेश्चन ये। मुझे डर था ये सवाल आज उठेगा इस पे मुद्दे पे। रिसेंटली अभी अभी डब्ल्यू ने गाइडलाइन निकाला दैट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट सेफ, राइट? सो द होल कम्युनिटी और द होल मेडिकल कम्युनिटी इज राइट नाउ दोनों साइड है, so it's confused. So my take, my view, ये मतलब मेरा व्यू है, not a general view. मेरा व्यू ये है कि दोनों साइड खराब है। इफ यू गो टू मच ऑन आर्टिफिशियल स्वीटनेस इज बैड बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल एंड अ स्वीटनर। इफ यू गो सेइंग नहीं, बिल्कुल नहीं, यू नो, सो आई थिंक द मिडिल ग्राउंड वुड बी, डेटा नहीं है दोनों साइड, किसी की साइड, दोनों पार्टियों के पास डेटा नहीं है टू से कि सेफ है, सेफ नहीं है। सो नेचुरल शुगर्स क्या होते हैं? नेचुरल शुगर्स होते हैं भाई हमारे गुड़, बट आई एम नॉट सेइंग वो अच्छे हैं। बट इफ कोई डायबिटिक या कोई वेट लॉस के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर रहा है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। बट वंस इन अ वाइल अगर कोई यूज कर रहा है स्पेरिंगली, आई थिंक वो सेफ है।
क्योंकि डेटा मिक्स्ड है दोनों साइड, एज ऑफ नाउ साइंटिफिक जो डेटा है। बट डब्ल्यू ने ये भी गाइडलाइन इशू किया है, बट दैट्स मोर फॉर जो अदर फॉर्म्स ऑफ स्वीटनर सैकरीन वगैरह आए हैं, जो और जो आए हैं नेचुरा वैचरा कुड बी सेफर। डेटा दोनों साइड नहीं है टू मी टू से फॉर श्योर कि वो है। द कॉन्फिडेंस ऑन मी सेइंग दैट आंसर, that is it safe, can we use it daily? Daily तो should not be, preferably not be used. Once in a while probably अच्छा है, occasionally आप use कर सकते हैं, I think should not be a problem because they have been around since many years now and we haven't, हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम सुनी ही नहीं ना हमने देखी। सो देयरफॉर माय कमेंट वुड बी बीच का रास्ता, यूज इट स्पेरिंगली, कम से कम इस्तेमाल करें। एंड बट टू यूज इट फॉर वेट लॉस, नो, देयर इज नो डेटा फॉर दैट कि वेट लॉस के लिए हम शुगर फ्री यूज कर लें टू रिड्यूस आवर कैलोरीज, नो, इट्स बेटर नॉट टू यूज इट, दैट्स सेफर एज ऑफ नाउ, but once in a while you could use it, that's also okay. Yeah. So I think this sums it up because we are way ahead of our 1 hour mark. So yeah, I think this was an interesting session. Yeah, People you know बहुत अच्छे सवाल थे. I also yes, excellent. I hope people also would get a lot of value about their Hopefully, queries. hopefully, Yeah, yeah, hopefully, yeah, fingers crossed. Yeah, yes, yeah. yes. So any any suggestions with any if you want to add anything else From my side, in this session? Yeah, anything no, that no, you I want. think I have It's I covered. have gone on like a, मैंने रेडियो की तरह से I've kind of gone on Yeah, today. So but it's the same thing, that follow the plate method, keep yourself active as much as we can, take care of your posture, take a vitamin D once a month, and I think the best is hear your body, राइट। हम अपनी बॉडी की भूलना सुन, मतलब वी फॉरगेट। सो हियर योर ओन बॉडी एंड इवन स्मॉल लिटिल बिट, छोटा छोटा भी कुछ कर लें, राइट, दैट गोज अ लॉन्ग वे, दैट गोज अ रियली अ लॉन्ग वे। सो समटाइम्स वी काइंड ऑफ हम आलस में वी ट्राई टू से यार एक्सरसाइज, आज बारिश है, आज धूप है, कल से करूंगा, कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। बट अगर हम कहीं रोज में ही यार कहीं एक्सरसाइज करनी थी, आज मैं निकला हूँ, या घर में ही फॉर दैट मैटर, राइट, अगले 10 मिनट कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो कैन आई जस्ट वॉक 10-15 minutes, राइट, वो आइडिया का ऐड था, राइट, वॉक द टॉक और समथिंग लाइक दैट, of that sort. So something of that sort, small bit be goes a long way. That will be my end message here. I guess I'll just leave it there. Right. yeah, sure. So I just wanted to wish you a very happy Doctor's Day, Thank you. and we hope we'll keep adding these sessions on our YouTube channel so that people get the value of anything because our Doctor's Day, so people I think it was very important for people to get the message out, people to know about these things. Thank you. This is really important. No, no. Yeah. Thank So you all. yeah, thank you, Dr. Manish. Yeah. So yeah, bye everyone.